बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्टूडेंट्स, टोटल 6 पार्ट्स हैं और इन 6 पार्ट्स में आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ कम्प्लेक्स नंबर और इस कम्प्लेक्स नंबर में स्टूडेंट्स ये जो रियल नंबर है ये रियल पार्ट है। गॉट इट स्टूडेंट्स? और ये जो एयोटा का कोएफिशिएंट है ये 1 है। एयोटा का जो कोएफिशिएंट है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। सो real part of the complex number is 1 and the imaginary part of z is 1. Got it students? Now second part, real part of z is this one, -1, and the imaginary part of z is 2. ये जो एयोटा का कोएफिशिएंट है 2. Got it students? Now third part, real part of z is 2. ये जो रियल नंबर है and the imaginary part of z is -3. Now next, fourth part, real part of z is -2 and imaginary part of z is also -2. Fifth part, real part of z. Students, you can see यहाँ real number नहीं है। It means कि real number फिर 0 होगा और जो फिर real part है इस complex number का वो obviously 0 है। And the imaginary part of z is -3. Now final part, sixth part, real part of z is 2 and the imaginary part of z is 0. Got it students? तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।